Hi friends, in this session we'll start with the chapter number 4 chemical bonding. So topic number 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे what actually means by ionic bond and covalent bond. First point, chemical bond. The attractive force which holds together to the constituent particle in a chemical species are known as chemical bond. And after chemical bond, most important 2 marker question, what actually means by octet rule. अगर यही क्वेश्चन 4 मार्कर में पूछा गया तो ड्रॉ द ऑक्टेट रूल एंड डिस्कस इट्स लिमिटेशन. द ऑक्टेट रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ दिस केमिकल बॉन्डिंग वाज डेवलप्ड बाय कोसेल एंड लोवाइस. तो ये कोसेल लोवाइस के जो डॉट स्ट्रक्चर थे उन्होंने बताया कि वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन उतने डॉट आप एलिमेंट के आसपास लगा दीजिए. दैट इज कॉल्ड कोसेल लोवाइस स्ट्रक्चर. In case of lithium, we have only 1 dot. In case of beryllium, we have 2 dot, just because 2 electrons are available in valence shell. According to this rule, atom can combine either by transfer or the valence electron from one atom to another, or by sharing their valence electron. Principle of attaining maximum of 8 electron in valence shell of an atom is called octet rule. Limitations of octet rule. It cannot be applied to this non-metals after silicon in this periodic table. This element can expand their octet और expansion के अंदर 10 और 12 इलेक्ट्रॉन भी मिले. Best example is PF5 SF6. Odd number of electron NO and NO2 का best example. And less than carbon species, that is lithium, beryllium and boron, do not achieve their octet. So these are the major limitations of octet rule. Next is ionic bond. Ionic bond आप सभी को पता है. जैसे ही ionic word दिमाग में आता है सबसे पहले एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है NaCl. Na is 281, Cl is 287. 1 electron from sodium goes to this chlorine and converted into Na plus and Cl minus. That is Na plus means 28, nearest noble gas configuration. By getting 1 electron, Cl converted into Cl minus, that is 288. Ionic bonding is a type of chemical bond that involves this electrostatic attraction between the oppositely charged ion. Together is known as ionic bond or electrovalent bond. Properties क्या होगी ionic bond की? Ionic bond की property होगी compound having the high melting and boiling point. They have a higher enthalpy of fusion and vaporization, hard and brittle, solid, good insulator. The ionic bond are non-directional because of each ion surrounded by this oppositely charged ion. So this is all about your properties of ionic bond. Let's move on to this next point, that is called as covalent bond, sharing of electron. A covalent bond is a chemical bond that involves the sharing of electron pairs between atoms. The stable balance of attractive and the repulsive force between this atom when they share electron are known as covalent bonding. That is HH के बीच में hydrogen bonding, Cl के बीच में chlorine के बीच में. This is called as homomolecular species. Next best example is CH4, carbon having 4 electron in valence shell, hydrogen having 1. So hydrogen is achieved by duplets and carbon achieve their octet. So this is also called the application of Kosail-Levy structure. H and Cl, that is HCl, O and O. One oxygen having 6 electron, another oxygen having 6 electron. These 2 electrons are shared with each other and due to this we have a O double bond O molecule. Likewise, another best example is nitrogen having 5, another nitrogen having 5. In this between 3 electrons are shared and you get N triple bond N. Next is Levy's structure of ionic compound. So that is NaCl, KCl, Ca twice, N2 and many more. This is Kosail-Levy structure और ये सारे के सारे structure हमने in detail discuss किए थे when we discuss this part separately through the year. Few more example of Kosail-Levy structure. That is H2S and H3. Then we have a CCl4. Then we have a CH4, that is tetrahedral geometry, that is methane.
Then we have one more example, that is CH2 double bond CH2, CH triple bond CH, and finally is HgCl2. So this is all about your Koszal-Lewis structure. Next we have a formal charge. The formal charge of an atom in an polyatomic ion or molecule is defined as, one marker definition, the difference between the number of the valence electrons in an isolated atom and the number of electrons assigned to this atom in a Lewis dot structure is known as formal charge. Formal charge का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है total number of valence electron in free atom minus total number of non-bonding, that is called as lone pair, minus half of bonding or share pair. So formal charge is equal to V minus L minus half of S, where Fc means formal charge, V means valence shell के electron, L means lone pair, S means shared pair. फाइन. सो उसके ऊपर से आप फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव अ बॉन्ड पैरामीटर्स. बॉन्ड पैरामीटर के अंदर हमें तीन चीज पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एंथैल्पी. लेट्स स्टार्ट विद द बॉन्ड पैरामीटर. बॉन्ड लेंथ. The bond length is defined as the average distance between the center of the nuclei of this two bonded atom in a molecule. So here in case this is A atom, this is B atom, A and B के बीच का difference, that is R is equal to RA plus RB. So covalent radius is nothing but RA plus RB is equal to D by 2. Next is bond angle. It is defined as the angle between this orbital containing bonding electron pair around the central atom in a molecule or in a complex. For example, bond angle of some component H2O, CH4 and ammonia. ये concept आपको VSEPR भी पढ़ाएगा. CH4 does not have any non-bonding pair of electron. sp3 hybridization, that's why bond angle is 109-5 minute. Ammonia having one non-bonding pair of electron. Due to this non-bonding pair of electron, angle decreases 107.5 minute. And finally, when we reach to this H2O, two non-bonding pair of electron, and due to this angle more decreases to this 104-5 minute. Next is bond enthalpy. It is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular type between two atom in a gaseous state. Basically अगर होमोएटॉमिक स्पीशीज होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वही होगा जो होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दैट इज H2 H and H को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड H2. बॉन्ड ऑर्डर. In a Lewis description of this covalent bond, in the bond order, it's given by the number of bond between these two atom in a molecule is known as bond order. जैसे अभी हमने कोवेलेंट में पढ़ा, O2, O double bond O, bond order is 2, N triple bond N, bond order is 3. Most important one line याद रखिएगा, the stability of this molecule can be understood by the statement with increase the bond order, the bond enthalpy increases and bond length decreases. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का डिस्टेंस ज्यादा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड का उससे कम, एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का उससे भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट. ये पोलर और नॉन पोलर पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट हमें पढ़ना है डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट मीन्स the species having partially positive, partially negatively charged, means compound having polar in nature, they have some dipole moment. Non-polar means homomolecular species H and H दोनों के ऊपर partially positive होगा, Cl2 that is ClCl दोनों के ऊपर same negative charge होगा. The atom of the same element attract electron equally, so in the another word, shared electron pair will lies exactly midway between these two atom. Example देख लीजिए, same H2 O2 Cl2. पोलर का मतलब दो डिफरेंट होगा, HF HCl H2O
So oxygen is partially negative, hydrogen is partially positive. In HCl, chlorine is partially negative, hydrogen is partially positive. Dipole moment, one marker question. The product of this magnitude of this charge and the distance separation between the charge. It's mathematical statement, dipole moment mu is equal to Q into D. Q is equal to charge, D means distance of separation. It is equally expressed by D by. डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, कूलम्स इनटू मीटर. 1 डी बाय का वैल्यू भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछा हुआ है, 3.33564 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर. सो HCl is represented by cross arrow. This is equilibrium condition. This arrow is completely wrong. आप सभी को पता है डायपोल मोमेंट को क्रॉस एरो से डिफाइन किया जाता है. क्रॉस स्टार्ट होगा पार्शियली पॉजिटिव के साथ एंड एंड होगा Cl पे, दैट इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज पे. Let's start with the topic 2, that is resonance and VSEPR, valence shell electron pair repulsion. So resonance हमने ऑर्गेनिक में भी अभी रिसेंटली कंप्लीट किया हुआ है. रेजोनेंस क्या है? When a molecule cannot be separated by a single structure, but its characteristic property can be described by these two or more structure, then the actual structure is said to be a resonance hybrid of the structure. Then condition क्या होनी चाहिए? तो कंडीशन सारी की सारी कंडीशंस आपको पता ही है, हमने अभी डिस्कस किया हुआ है. वन मार्कर क्वेश्चन, व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय रेजोनेंस एनर्जी? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल and that of this most stable resonating structure. So resonance energy is nothing but actual bond energy minus energy of this most stable resonating structure. Next is VSEPR theory. Sidgwick Powell ने first time ये introduce किया. And then we have a postulates of VSEPR theory. What is the conclusion of VSEPR? LP-LP repulsion is more as compared to this LP-BP than BP-BP. लोन पेयर का लोन पेयर के साथ, लोन पेयर का बोन पेयर के साथ एंड बोन पेयर का बोन पेयर के साथ रिपल्शन सबसे कम होगा. हाईएस्ट रिपल्शन इन लोन पेयर टू लोन पेयर, लोवेस्ट रिपल्शन इन बोन पेयर टू बोन पेयर. सो दिस इज द पोस्टुलेट, और पोस्टुलेट आप सभी को पता है. The conclusion is LP-LP repulsion is more as compared to this LP-BP and final is BP-BP. So this is all about your VSEPR theory. Next is valence bond theory, hybridization and molecular orbital theory. So before we go for a valence bond theory, we have to discuss the sigma bond and pi bond. अब सभी को पता है सिग्मा बॉन्ड क्या है. सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, and double bond containing species are entitled as a pi bond. The type of covalent bond is formed by this end-to-end or head-to-head overlapping orbital along with this internuclear axis. Overlap is known as head or axial overlapping. SS overlapping. So molecular orbital theory समझने से पहले आपको ओवरलैपिंग समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. That is SS. S is symmetrical in nature. हमने चैप्टर 2 के अंदर लास्ट पार्ट में सभी के फिगर चेक किए थे. Then P is dumbbell and D is double dumbbell. तो SS ओवरलैपिंग इस हिसाब से होगा, S and P का ओवरलैपिंग इस हिसाब से होगा, दिस इज SP ओवरलैपिंग, एंड PP ओवरलैपिंग अगर X एक्सिस हुआ तो इस हिसाब से होगा. सो ये सारे के सारे ओवरलैपिंग है वो ये है सिग्मा बॉन्ड वाले ओवरलैपिंग. इफ समबडी आस्क हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, तो यू कैन से दैट SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग एंड PP वो भी X एक्सिस वाला. देन वी हैव अ PY and PZ, that is pi bond. We start with the pi bond. P plus P overlapping takes place, that is called as pi bond. Strength of sigma bond and pi bond आप सभी को पता है. Sigma bond is stronger bond as compared to this pi bond and pi bond is a weaker bond. तो ये सारी चीज आपको हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प होगी. sp hybridization, sp2, sp3, sp3d and sp3d2 hybridizations are there in our syllabus. We start with the sp hybridization.
that is BeH2 or BeCl2. Be electronic configuration is 1s2, 2s2. Excited state, one of the 2s electron jump from 2p, and here we get sp hybridization. तो BeH या फिर BeCl2 शेप हो जाएगा लीनियर, दैट इज एंगल इज 180 एंड शेप होगा लीनियर. देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 के लिए बेस्ट एग्जांपल होगा BH3 और BCl3. बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1, 2s 1 electron jump from 2p and you get sp2 hybridization. sp2 hybridization के अंदर एंगल होगा 120 डिग्री and planar triangular is your angle. So here in case we have a planar triangular and BCl3, sp2 hybridization. Third position we have sp3. sp3 के अंदर तीन और सब केस होंगे, CH4, NH3, H2O. CH4 carbon 1s2, 2s2, 2p2. One electron jump from 2s to 2p and we get sp3 hybridization. It's a tetrahedral geometry. Bond angle is 109-28 minute. So this is all about your CH4. Next we have NH3. NH3 non-bonding pair of electron मिल जाएगा. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. So we have sp3 hybridization. This is our lone pair and उसका shape हो जाएगा plain pyramidal and this is non-bonding pair of electron and angle is 107. अगर simple sp3 है, CH4 है तो 109-28 minute. Next example is H2O. Oxygen 1s2, 2s2, 2p4 and due to this we have sp3 hybridization, two lone pair of electron, bond angle is 104-5 minute and V shape, or you can say that band structure. And finally we have a comparison of sp3. One is CH4, another is NH3, another is H2O. सबसे पहले bonding pair electron कितने हैं? तो CH4 में 4, NH3 के अंदर 3, NH2O के अंदर 2, non bonding 0, 1, 2. Then we have a shape tetrahedral, next होगा pyramidal, last होगा band and 109-28, 107, 104-5. This is not trigonal bipyramidal, this is a simple pyramidal, planar pyramidal structure होगा यहाँ पे. Next sp3d, PCl5, phosphorus, neon core 3s1, 3p3 and 3d1. One electron jump from D and we have sp3d hybridization. This is PCl5 structure. This PCl, Cl, Cl जो black से draw किए हुए in plane होंगे, Cl and Cl above the plane and below the plane structure. This is trigonal bipyramidal, angle होंगे 90 and 120. sp3d2, SF6. Sulfur, neon core 3s1, 3p3, 3d2. So finally you have a 6 electron, 6 वहां पे introduce हो जाएंगे. You have sp3d2 hybridization. Structure बन जाएगा octahedral. Bond angle is 90. So this is all about your SF6. We'll start with the molecular orbital theory. Molecular orbital theory के अंदर diagram is really very important one. Diagram अच्छे से prepare कर लीजिएगा और definitely 1 or 2 MO diagram gonna ask in your examination. Next we have a bonding and non-bonding, BMO, ABMO. बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. जब भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तब जाके आपको 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगी. ये 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सी है? वन इज BMO, अनदर इज ABMO. BMO को डिफाइन किया जाता है सिग्मा एंड पाई से एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मींस ABMO को डिफाइन किया जाता है सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से. So this is all about your bonding and non-bonding pair of bonding and non-bonding molecular orbitals. For a molecule of O2 and onwards means O2, उसके बाद होगा फ्लोरीन एंड इसके बाद होगा नियॉन. इसके लिए उसका ऑर्डर है सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2p z, pi 2p z equivalent to pi 2p y,
then this is pi 2p x equivalent to pi 2p y, then pi star 2p x equivalent to pi star 2p y, and last is sigma star 2pz. So here in case एक चीज याद रखना है, 2pz फिलिंग फर्स्ट. कब? ऑक्सीजन के केस में, फ्लोरीन के केस में, नियॉन के केस में. रिमेनिंग केस दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तक क्या होगा? तो 2pz मोलिकुलर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी एंड देन 2px मींस पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py पहले फिल होगा, उसके बाद सिग्मा 2pz. ऊपर क्या हो रहा है? सिग्मा 2pz पहले फिल हो रहा है, देन पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py. यहाँ पे पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py पहले फिल होता है, देन सिग्मा 2pz. एंड लास्ट इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आप सभी को पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर टू टाइप्स, इंटरमोलिक्यूल एंड इंट्रामोलिक्यूल. Intermolecular hydrogen bonding is formed between the different molecule, or intramolecular is all about within the molecule. So this is all about your chapter number 4 chemical bonding. In detail सारे के सारे वीडियो सेशन बाय सेशन आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है. कोई टॉपिक में नहीं पता चल रहा है तो वो आप चेक कर सकते हो. This is all about from my side. Thank you so much.